Hello students, my name is Debashish Kumar Konda and from in this channel we are going to discuss a new topic of your plus 2 first year science, that is your the student those are joined in the plus 2 first year science of CHSC. They are going to start this chapter, that is your physics. It is the first chapter of your physics, and first of all, discussing from of physics, we will start from the science, because all of you are now enrolled in the science stream. समस्त लोग साइंस पढ़िया ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ଆଡମିशन କରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ର डिफरेंट ब्रांच ବିଷୟରେ ଆମେ डिस्कशन କରିବା। तो स्टार्ट करिया प्रॉब्लम हमें साइंस टू। तो साइंस का मीनिंग एक्जेक्टली कौन? साइंस, द वर्ड साइंस इज derived from a Latin word that is your scientia, and the meaning of scientia is to know, जानिबार आग्रह बा नुआ कथा जानिबा बा जानिबार जो प्रकार स्पृहा, जहाँ पर कौन हम आम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करवा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करवा, तार गोटे तथ्य को आम आनिक ताकू आमर सब इम्प्लीमेंट करवा, सब काम इम्प्लीमेंट करवा, ताकू ही आम कौन कहबा साइंस कहबा। तो साइंस विषय रे बहुत बही रे बा बहुत तथ्यकार माने बहुत प्रकार तथ्य देछन, किंतु ए गोटे तथ्य हम भाबुछ माने बुझी पारिबो, जहाँ को आम कहू जे कोन ना इट इज ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज gained by man through keen observation and experiments is known as science। ता माने कोन सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, जोडा को हमर कोन होता है ना सिस्टमैटिक माने स्टेप बाय स्टेप सब प्रणाली गोटे पर गोटे सिस्टमैटिक की थिबो। ता सहित कोन हेतिबो ना ए जो नॉलेज बा जो ज्ञान हमें मनुष्य का जो गेन बाय द मैन, जोडा को मनुष्य प्राप्त करिछि बाय कोन ना कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत तीक्ष्ण ऑब्जर्वेशन आउ एक्सपेरिमेंट परीक्षा निरीक्षा द्वारा मनुष्य जो ज्ञान को आरोहण करिछि, सिस्टमैटिक ज्ञान को आरोहण कर ताकू हम कहू विज्ञान बा साइंस, बुझिया। तो साइंस केबेठ आरंभ होइछि, जो दिनठु हमर ह्यूमन सिविलाइजेशन आरंभ होइछि, इट इज सम क्रोर्स ऑफ इयर्स एगो, जो जेबेठु हम ह्यूमन सिविलाइजेशन आरंभ होइ सेबेठु विज्ञान रा विकास होइछि। विज्ञान कोन जो नुवा जिनिस नुहे बा नुवा तथ्य नुहे, इट इज ए वेरी एंशिएंट, जेमिति मनुष्य प्राचीन से बड़ा विज्ञान बहुत प्राचीन। तो विज्ञान केबेठु आरंभ होइछि ना फ्रॉम द प्रिमिटिव डेज, सेबेठु विज्ञान रा विकास होइछि, जेबे मनुष्य जेमिति विकसित हेइ आछि, इवोल्यूशन जेमिति मनुष्य रे सेमिति विज्ञान रे इवोल्यूशन हेइछि। ठीक अछि, तले वर्तमान केमिति जानिबा, प्रथमे मनुष्य माने कोन करथले ना जेते बहुत पुरातन काल रे मनुष्य माने जंगल रे रहथले, से माने कोनोस प्रकार सभ्यता तांको जणा नथिला। से माने धीरे धीरे कोन करे ना निया रे व्यवहार सिखिले, दे आर एबल टू नो हाउ टू यूज फायर। निया रे आवश्यकता कोन से माने जान नथिले, तो निया को जे डरुथिले, दे आर अफ्रेड ऑफ द फायर। तापर से माने कोन करे ना धीरे धीरे दे कैन एबल टू control over the fire, how to control the fire they know, they can preserve the fire। तो निया संरक्षित कर रखिले, तो कामर लागेले, ता खाद्य को पोडी के खाइले, या पर जने भलो खाद्य खाइ पारे। सो एभर जाके आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चलिला। तो सेई दिन कोन हेतिबा निश्चय मानव मनुष्य मानवर जो हमर अछि मस्तिष्क रे विकास हेतो, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन आल्सो हैपेंस फ्रॉम देम, जा पर कोन होला ना हमर विज्ञान रे विकास होला। तापर हम चक्र व्यवहार जानिले, अस्त्र रे व्यवहार जानिले, घर करिक रहिले, हला निजर सुख सुविधा पे सब जगह दिन छोड़ा से एकत्रित करे के लागिले। ऑल दिस थिंग्स help the human being to develop the science। तो science always कौन हुए ना, it always helps the human being for their kindness। So now हमें साइंस जानिले, वर्तमान साइंस रो केते प्रकार भेद वर्तमान हम देखिबा। साइंस को हमें बेसिकली दी प्रकार विभक्त करिছে, बुझाले। तो विज्ञान को हमें दी प्रकार विभक्त करिছে, और साइंस इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, one is physical science, another one is your biological science। Clear? So physical science and biological science। तो फिजिकल साइंस में कहा कहबा
ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଟା ଆମେ वर्तमान ଆମେ आर डिफरेंट स्टेप्स पर देखिबा ताले वर्तमान साइंस जो क्लासिफिकेशन अछि फिजिकल साइंस और अलग नेक्स्ट तमरा बायोलॉजिकल साइंस ताले वर्तमान पिले तमान को कोन तो टू टाइप्स ऑफ साइंस दैट इज कोन ना फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस ताले फिजिकल साइंस में कहा कहै जेबा फिजिकल एक्चुअली भौतिक माने जो माने कोन अछन जो माने नाहन नॉन लिविंग थिंग्स हम चारिपटे जहाँ सब देखु ऑल द केमिकल्स ऑल द मैटर्स हम जहाँ सब देखु ये सब है नॉन लिविंग थिंग्स ए फैन टा हमर फॉर एग्जांपल फैन ए ब्लैक बोर्ड ए चॉक जहाँ भी हम देखु ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स क्लियर जो साइंस हम पढिबा कोन ना अबाउट ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स ताको कोन कहबा ना फिजिकल साइंस क्लियर The physical science क्या कहला the science which deals with the study of non-living things is known as physical science ताको हम exactly कौन बोलते ओडिया ना भौतिक विज्ञान क्लियर तो यार कौन सा ब्रांचेस अछि ना फिजिक्स केमिस्ट्री ला बेसिकली टू ब्रांचेस ऑफ द फिजिकल साइंस एंड बहुत ब्रांच अछि एस्ट्रोनॉमी अछि बुझला पैलेंटोलॉजी बहुत सारा ब्रांचेस अछि किंतु बेसिकली हम कौन देखुचे ना केवल फिजिकल साइंस दिला ब्रांच फिजिक्स और केमिस्ट्री बुझियला तब नेक्स्ट को सेकंड को बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजी माने कोन ना लिविंग थिंग्स जेमति जति प्राणी जगत अछंती उद्भिद प्राणी पशु पक्षी हम माने समस्त आधार जेबा जते प्रकार लिविंग थिंग्स बैक्टीरिया वायरस छोटो आरंभ करी बड़ माइक्रो आरंभ करी मैक्रो बुझियला जोरा को बहुत सानो आरंभ करी बहुत बड़ जति कि लिविंग थिंग्स अछंती पृथ्वी रे ताका विषय जति हम पढे ताको हम कोन कहूचे ना बायोलॉजिकल साइंस बुझियला ता माने कहा कहबा ना द साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस includes two basic branches that is zoology and botany clear so here zoology and botany are two basic branches of biological science. Then I want to discuss about physics and chemistry. Physics is basically the study of matter and energy, and chemistry is basically the study of chemical things like sodium, calcium, potassium. All the chemical things are observed by the chemistry branch. Similarly, zoology it is a branch which deals with the study of animals. Animals, birds, human beings, medical science, all these are included in the zoology. And botany is the branch of science which deals with the study of plant kingdom. Zoology is animal kingdom and botany is the plant kingdom. Clear? So here two branches are there, physical and biological. Physical is chemistry and physics, and similarly biological is the zoology and botany. So these are the basic branches of the science. So in this above branches we are going to close to our branch that is physics. Clear? So now let us discuss about the branch physics because it is also a important branch of the physics. Clear? So now Vishwanath तो वर्तमान हमें फिजिक्स प्रति इंटरेस्ट आसलानी हमें सब टॉपिक जानले साइंस का कोइ जे वर्तमान हमें पढिबा कोन ना फिजिक्स का कोइ जे वर्तमान हम फिजिक्स विषय आलोचना करबा ठीक है तो वर्तमान हम फिजिक्स विषय पढिबा ठीक है सर पिला वर्तमान देखिबा फिजिक्स विषय वर्तमान हम डिस्कशन करिबा जे व्हाट इज फिजिक्स नीड ऑफ फिजिक्स जहा के हमें वर्तमान गोटे विषय पूरा तुम फिजिक्स रहला इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ योर प्लस 2 साइंस बुझियला तमर यार आवश्यकता सब एंट्रेंस यार क्वेश्चन पड़िबो सब जगह रे तमे जोटी परीक्षा देनी कि टू सब जगह फिजिक्स रे एप्लीकेशन हमर रहइबो बुझियला सो इट इज द मेजर and fundamental subject of the second year plus 2 science. So now
First, we know what is physics. Basically, physics is the relation of matter and energy, or a discussion between interaction between matter and energy. Clear? The basic, it deals with the study of matter and energy. So before starting the phenomenon, you should know one phenomenon I have written on this blackboard. That is your physics is the branch of science that deals with the study of basic laws of nature, and their manifestation in the various natural phenomena. Basic laws of nature माने काय कहबा कोडा का basic laws रे आसीबो तमन का basic laws रे आसीबो तमन कर कोन ना हमर space time energy motion radiation ये सब तमन आसीबो कोथरे तमर laws of nature अंडर आसीबो study of the basic laws of nature रे एकटा आसीबो कोडा तमर motion कोड गाटा मूव करूछ से motion ने जाउछ atom nucleus सब घुरुचंती electrons are revolving planets are revolving or all are in motion बुझेला तापर एनर्जी जति को हम गोटे वस्तु को हमें कोन हीट सप्लाई करछे गरम करछे तापर हीट एनर्जी डेवलप हो जाउची बुझेला डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी अछि साउंड एनर्जी टाइडल एनर्जी बुझेला लाइट एनर्जी हीट एनर्जी से बहुत प्रकार एनर्जी अछि ता सहित रेडिएशन माने जो लाइट ता जो आसुचे हमको से रेडिएशन तक हमें कहबा ए सब जिंस को हमें नेचुरल पर नेचर एग्जिस्ट करछन आमे को हानि ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन द नेचर ताको हम माने पढिबा से काहा द्वारा से गुडा को हमें कोन करूचे से माने किए गवर्न से माने किए चढौचे को लॉज रे ओडा चालुचे को प्रकार नियम एमन से मानुचंती ए सब जिंस गुडा को फिजिक्स रे हम डिस्कशन करिबा ओडे आमे केमि चालुचे मतलब आमे वी आर वर्किंग हियर क्लियर आमे केमता ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू राइट मो केम लेखुची ब्लैक बोर्ड रे ड्यू टू द फ्रिक्शन जे आपण कोन तो चॉक टा ब्लैक बोर्ड रे लेखि हे पर आमे किछ से लेखि करू ड्यू टू फ्रिक्शन मो केम किछ नाइ ड्यू टू ग्रेविटेशन क्लियर मो जहा कोच ता माने सुनी पाउछ ड्यू टू द sound energy by wave sound waves these all are the form of different natural laws clear तने वर्तमान हम कोन देखिले ना फिजिक्स का बेसिकली इंटरप्रिटेशन का भीतर जाईची ना मैटर एंड एनर्जी मैटर को प्रकार लॉ रे एग्जिस्ट करूची एनर्जी को प्रकार लॉ रे एग्जिस्ट करूची एनर्जी के ट्रांसफर होची मैटर के आगोटे प्रकार ट्रांसफर होची ए सब जिंस को देखि हम कोन डिस्कशन करछे ना फिजिक्स के कांसेप्ट को हमें अरेंज करछे क्लियर सो वर्तमान हम देखिबा कोन जो फिजिक्स को डायरेक्ट बुझी पलेटा बात को जे इट इज बेसिकली it is the natural phenomenon which governing the natural activities like your energy your space time motion radiation these all are basically a natural law so now physics is also classified into two categories that's the classical physics second is a quantum physics. Classical physics is the physics which deals with the macroscopic bodies. Macroscopic means which you can able to see. जब हमें देखि परिबा तको macroscopic. जेमते कि heavenly bodies, terrestrial bodies जेमते कि हम देखिले sun, moon, earth, ए रूम duster, chalk, blackboard, your plant, fan, anything you can see. All are macroscopic bodies. The science of the physics which deals with the study of these objects that we call classical physics, that is macroscopic science. Then quantum mechanics deals with the microscopic. Microscopic means those are not able to, which are not able to see by your naked eye, like electron, proton, nucleus. These are basically microscopic, which we cannot able to see in our naked eyes. We have to use some kind of electronic microscope or device to study such objects. So the science of the physics which deals with the microscopic object, that is your quantum mechanics, and macroscopic is your classical physics. So always remember two things.
microscopic and macroscopic. Macro. Macro means those that we can see jaha हम देखि परिबा और माइक्रो मान जाहा हम देखि परिबा नाही जेमति कि वायरस बैक्टीरिया एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन all these things are microscopic. So macroscopic and microscopic things classified into two categories. There is a classical physics, another one is a quantum physics. Clear? So now we will see how there are such branches of physics which we can study now. So let us discuss about the different kind of branches of physics. So now the two categories of physics like classical physics and quantum mechanics, these two classification of physics are divided into these following categories. Clear? So first the physics branch is your mechanics. Clear? It deals with the objects are in motion, are in slow motion, rotational motion, linear motion, speed, velocity, distance. These things we will study in this mechanical or mechanics chapter. Clear? So mechanics is a branch of physics which deals with the study of the particles are in motion. The particles are in motion will be described by here mechanics. Mechanics means in motion. Clear? And rest are in motion. Then here optics. Optics is a branch of physics which deals with the study of nature, propagation, behavior of light. The study of आलोक विषय जो हम पढ़िबा ताको हम कोन कहउछे ना हम कहउछे ताको ऑप्टिक्स. आलोकर व्यवहार जो हम पढ़िबा से ऑप्टिक्स. तापर हम कहबे थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स माने कोन हबो? The branch of physics which deals with the study of heat and temperature, that is known as thermodynamics. जेमति कि हमें ताप विषय रे पढ़िबा जोथरे हमें गरम कले गोटे ऑब्जेक्ट गरम कले कोन हबो, ठंडा कले कोन हबो, गरम ठंडा ए सब जिंस विषय जो हम पढ़िबा ताको हम कोन कहबा ना थर्मोडायनामिक्स. गोटे वस्तु ऊपर केमिति गोटे तापर केमिति तार ऊपर इंपैक्ट पडु ताको हम कहबा थर्मोडायनामिक्स विषय पढ़िबा. तापर हम नेक्स्ट अछि इलेक्ट्रोडायनामिक्स. आदर कोन पढ़िबा हम इलेक्ट्रिक द्वारा केमिति काम होई पारो, इलेक्ट्रिसिटी रा यूजेस, इलेक्ट्रिक द्वारा केमिति फैन बुलुची, केमिति सब प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट काम करूछ ता विषय पढ़िबा को तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स रे. डायनामिक माने मोशन, स्टैटिक्स माने रेस्ट. तापर नेक्स्ट आसे कोन क्वांटम मैकेनिक्स. त माने क्वांटम कथा कहिथिले क्वांटम माने स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस. Then relativity. It is the term which is basically study of the space and time. The distance, space, time. This chapter will discuss in the relativity. So these are the basic concept of physics which will be discussed in the further classes. So now this is for today class. So this is the introduction class. So we will discuss about the next chapter. We will discuss the next. Thank you. Have a nice day.